Hello student, myself Parul Modi and you are my 10th standard Gujarat board student. Okay, hello student. Today I want to share that because of COVID-19, Gujarat State Board has reduced some course, some chapters, some syllabus for your Hindi, Gujarati and Sanskrit subject also. Students, they have reduced 5 chapters in Gujarati subject, 5 chapters in Sanskrit subject and 7 chapters in Hindi subject. Beta, they have not reduced any topic of grammar or any topic of writing section in Hindi, Gujarati and Sanskrit subject. So student, in this video, I have shared which chapters will come and which chapters will not come in your board exam 2020-21. Students, so you please concentrate on this video, you see full video and you should tick or you should put round in your textbook in the index on the chapters which will not come only for this year in board exam. Okay? Students, for Gujarati subject and for English medium, there is Gujarati subject textbook of second language, द्वितीय भाषा. ओके बेटा, तो मेरा बेटा द्वितीय भाषा यानी सेकंड लैंग्वेज गुजराती सब्जेक्ट એમાં તમારા અભ્યાસક્રમમાં રાખેલા પ્રકરણો જે છે એ આ પ્રમાણે છે. ચેપ્ટર નંબર 1 મોરલી પદ્ય, ચેપ્ટર નંબર 2 શરણાઈના સૂર ગદ્ય, ચેપ્ટર નંબર 3 પ્રયાણ ગદ્ય, ચેપ્ટર નંબર 4 જીવન અંજલિ થાજો પદ્ય, ચેપ્ટર નંબર 6 સામગ્રી તો સમાજની છે ને, અને ચેપ્ટર નંબર 7 જીવમાં જીવ આવ્યો. ઓકે સ્ટુડન્ટ્સ, ચેપ્ટર નંબર 12 ઝબકજ્યોત ગદ્ય, ચેપ્ટર નંબર 13 ક્યારે વાગી પદ્ય, ચેપ્ટર નંબર 14 જેઠીબાઈ ગદ્ય, ચેપ્ટર નંબર 15 તે બેસે અહીં પદ્ય, ચેપ્ટર નંબર 16 પ્રાણનો મિત્ર ગદ્ય, ચેપ્ટર નંબર 17 ટિફિન ગદ્ય અને ચેપ્ટર નંબર 18 લઘુ કાવ્યો પદ્ય. તો સ્ટુડન્ટ્સ, ટોટલ આપણા અભ્યાસક્રમમાં કેટલા ગદ્ય અને કેટલા પદ્યનો સમાવેશ થયો? ગદ્ય 7 અને પદ્ય 6. ટોટલ ચેપ્ટર્સ વિચ વિલ કમ ઇન બોર્ડ સિલેબસ. ટોટલ કેટલા ચેપ્ટર્સ બોર્ડમાં આવશે? તો 1, 3, 13 ચેપ્ટર્સ આવશે. ટોટલ તમારા ચેપ્ટર્સ ટેક્સ્ટબુકમાં 18 છે, બટ એમાંથી 5 ચેપ્ટર્સ રિમૂવ થયા છે ફોર ઓનલી ધીસ યર. તો તમારા બોર્ડના કોર્સમાં ગુજરાતી સબ્જેક્ટ માટે 1, 3, 13 ચેપ્ટર્સ આવશે. 7 ગદ્ય આવશે અને 6 પદ્ય આવશે. ઓકે સ્ટુડન્ટ્સ, which chapters will be removed or which chapters are removed from your syllabus for Gujarati subject? It is here. Students, અભ્યાસક્રમમાંથી બાદ કરેલા પ્રકરણો તમારી સ્ક્રીન પર છે. એન્ડ રિમેમ્બર ઓનલી ફોર ધીસ યર. ચેપ્ટર નંબર 5 શ્વેત ક્રાંતિના પ્રણેતાઓ ગદ્ય, ચેપ્ટર નંબર 8 સૂરજ તો બધે જ સરખો ગદ્ય, ચેપ્ટર નંબર 9 હાથ મેળવીએ પદ્ય, ચેપ્ટર નંબર 10 નથી ગદ્ય એન્ડ ચેપ્ટર નંબર 11 દીવાનખાનામાં પદ્ય. Students, total chapters which will not in board syllabus for 2020-21 March, Gadya 03, Padya 02. Total 5 chapters તમારા કોર્સમાં આ બોર્ડ એક્ઝામ માટે નથી. સ્ટુડન્ટ્સ, એવું બની શકે કે ગુજરાત બોર્ડે ઘણું લેટ જાહેર કર્યું કે તમારો આ કોર્સ રિમૂવ થયો છે. તો આમાંના 2-3 ચેપ્ટર્સ તમે સ્ટડી કરી લીધા હોય, ગો થ્રુ કર્યા હોય, એની કોઈ પીડા તમારે ભોગવવાની નથી. બિકોઝ
રાઇટિંગ સેક્શન માટે તમને આ મટીરિયલ ઘણું કામમાં લાગે છે. જેટલા ચેપ્ટર્સથી તમે ગો થ્રુ થયા છો એ ચેપ્ટર્સ રાઇટિંગ સેક્શન માટે તમને નવી વિચારસરણી આપે છે. સો ડોન્ટ વરી, ઓકે, બટ રિમેમ્બર ધીસ ચેપ્ટર્સ વિલ નોટ કમ. સ્ટુડન્ટ્સ, નાઉ વી સી which topics of grammar will come in our board exam. વ્યાકરણ વિભાગના કયા ટોપિક તમારા સિલેબસમાં છે? Students, I have discussed with you in the beginning that there is not any topic removed by government for your board exam. આ વખતે બોર્ડ એક્ઝામમાં ચેપ્ટર્સ રિમૂવ થયા છે પણ ગ્રામર સેક્શનમાં કોઈ પણ ફેરફાર થયો નથી. તો પણ તમારી સાથે ગ્રામર ટોપિકની એકવાર ચર્ચા કરી લઈએ જે તમારી ટેક્સ્ટબુકમાં ઇન્ડેક્સમાં આપેલા છે. યુ કેન સી ઇન યોર ટેક્સ્ટબુક on the index page it is given. Number 1, એકમ 1 સમાનાર્થી વિરોધી જોડણી. એકમ 2 સંધિ એન્ડ સમાસ. એકમ 3 રૂઢિપ્રયોગ કહેવત. એકમ 4 વાક્યના પ્રકાર. સ્ટુડન્ટ્સ, આમાં કર્તરી, કર્મણી, ભાવે રચના અને પ્રેરક વાક્ય રચના આવે છે. અને વિશેષણ. એકમ 5 વિરામચિહ્નો, વાર્તાલેખન. એકમ 6 જેમાં રાઇટિંગ સેક્શન છે, લેખન વિભાગ છે, જેમાં સમાવેશ થાય છે અહેવાલ લેખન, રિપોર્ટ રાઇટિંગ, સંક્ષેપીકરણ, સાર લેખન, પ્રેસી રાઇટિંગ, અર્થ વિસ્તાર, એક્સપાન્ડ આઈડિયા, વાર્તા લેખન, સ્ટોરી રાઇટિંગ અને નિબંધ એટલે કે એસે કમ્પોઝિશન. સ્ટુડન્ટ્સ, hello students, for Hindi subject now we are discussing that which chapters will come, which chapters are removed. Okay beta, for Hindi subject the following chapters will come. अभ्यासक्रम में आने वाले प्रकरण इस प्रकार है. चैप्टर नंबर 1, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, पद्य. चैप्टर नंबर 2, बूढ़ी काकी, गद्य. चैप्टर नंबर 3, सवैये, पद्य. चैप्टर नंबर 5, मीरा के पद, पद्य. चैप्टर नंबर 6, कालिदास का प्राणी प्रेम, गद्य. चैप्टर नंबर 7, जन्मभूमि, पद्य. चैप्टर नंबर 8, सुधा मूर्ति, गद्य. चैप्टर नंबर 9, कुत्ते की सिख, पद्य. स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 13, साधुपदेश, पद्य. चैप्टर नंबर 14, मेरी माँ, गद्य. चैप्टर नंबर 16, चोरी, गद्य. चैप्टर नंबर 19, तोता और इंद्र, पद्य. चैप्टर नंबर 20, अल्बम, गद्य. चैप्टर नंबर 21, पहेलिया मुक्करिया, पद्य. चैप्टर नंबर 22, भीतरी समृद्धि, गद्य. एंड चैप्टर नंबर 23, भूख, पद्य. Students, the total chapters which will come in board 2020-21 are as it is, as the following: Gadya 7 chapters, Padya 9 chapters. Total 16 chapters will come in board exam. 7 Gadya, 9 Padya, इतने टोटल 16 चैप्टर्स आपके सिलेबस में हैं बोर्ड एग्ज़ाम 2020-21. स्टूडेंट्स, अभ्यासक्रम में नहीं आने वाले प्रकरण हैं चैप्टर 4, 1 प्रश्न 4 उत्तर, गद्य. चैप्टर 10, जीने की कला, गद्य. चैप्टर 11, भारतवर्ष हमारा है, पद्य. चैप्टर 12, एक नई शुरुआत, गद्य. चैप्टर 15, हे जनशक्ति महान, पद्य. चैप्टर नंबर 17, कश्मीर, पद्य. एंड चैप्टर नंबर 18, रचना, गद्य. टोटल 4 गद्य, 4 गद्य एंड 3 पद्य. टोटल 7 chapters will not come for Hindi subject in your board exam. Okay?
Students, for grammar, the following topics will become, or I have discussed with you in the beginning that there is no change in grammar section. फिर भी हम एक बार चर्चा कर ले. व्याकरण विभाग में नीचे दिए गए टॉपिक्स आपको आएंगे. नंबर 1, कहावत का अर्थ देकर वाक्य का अर्थ स्पष्ट करो. कहावत का अर्थ लिखना है आपको. अच्छा, आपकी टेक्स्ट बुक में कहावत अलग से नहीं होगी, बट टेक्स्ट में मीनिंग्स है, उसके साथ मुहावरे और कहावत मिक्स होती है. यू हैव टू गो थ्रू. नंबर 2, शब्द समूह के लिए एक शब्द. नंबर 3, संधि युग्म. आपको संधि युक्त करनी है, यानी ज्वाइन द संधि. नेक्स्ट, संधि विच्छेद. यू हैव टू स्प्लिट द संधि. मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य प्रयोग करें. नेक्स्ट टॉपिक, विलोम यानी विरोधी शब्द, ऑपोजिट. देन नेक्स्ट, पर्यायवाची यानी समानार्थी. देन भाववाचक संज्ञा. देन कर्तुवाचक संज्ञा. देन यू हैव टू फाइंड विशेषण. विशेषण टॉपिक भी कवर किया है. एंड लास्ट में समास. स्टूडेंट्स, टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 topics will come in grammar section for Hindi subject. Students, for writing section the following topics will become. लेखन विभाग के लिए नीचे दिए गए टॉपिक्स को आपको ध्यान में रखना है. नंबर 1, संक्षिप्त टिप्पणी. मेरा बेटा इसका मतलब होता है यू हैव टू राइट शॉर्ट नोट. संक्षिप्त, शॉर्ट में यू हैव टू राइट नोट. यू कैन सी ऑन पेज नंबर 62 63 ऑफ योर हिंदी टेक्स्ट बुक. ओके, वहाँ पे आपको 8 शॉर्ट नोट दी गई है, उसी में से यहाँ शॉर्ट नोट आएगी. सेकेंड टॉपिक है गद्य समीक्षा, जिसको आप गद्यार्थ ग्रहण कह सकते हो. प्रोज कॉम्प्रिहेंशन, ये अनसीन होता है, आउट ऑफ द टेक्स्ट होता है. नंबर 3, पत्र लेखन. बेटा यहाँ फॉर्मल इनफॉर्मल यानी औपचारिक अनौपचारिक दोनों पत्र आपको रेडी करने होते हैं, क्योंकि टेक्स्ट बुक में भले उन्होंने औपचारिक दिया है, पर लास्ट ईयर बोर्ड में उन्होंने अनौपचारिक पूछा था. देन टॉपिक कहानी लेखन. देन लास्ट टॉपिक निबंध लेखन, है ना. हियर ऑल्सो देर इज नो ऑप्शन बिटवीन 2 टॉपिक्स. ओके स्टूडेंट्स, here there is also no option between 2 topics. इसका मतलब क्या हुआ कि आपको संक्षिप्त टिप्पणी में, शॉर्ट नोट में वहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा, बट गद्य समीक्षा, पत्र लेखन, कहानी लेखन, ये जगह आपको कोई अंदर 2 टॉपिक के बीच में आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा. जैसे निबंध लेखन में 3 टॉपिक में से एक आध आपको लिखना है, उस प्रकार का होगा. जबकि हमारे गुजराती सब्जेक्ट में अर्थ विस्तार और विचार विस्तार, अर्थ विस्तार विचार विस्तार एंड सार लेखन यानी संक्षेपीकरण में है ऑप्शन. वैसे ही वहाँ अहवाल और वार्ता, ये दोनों के बीच ऑप्शन है. बट हिंदी सब्जेक्ट में टॉपिक्स ऐसे ही सेपरेट रहेंगे, 2 टॉपिक के बीच कोई ऑप्शन नहीं होगा. नाउ आई थिंक यू आर क्लियर फॉर गुजराती सब्जेक्ट एंड हिंदी सब्जेक्ट. ओके, now we will focus on Sanskrit subject. Students, now Sanskrit subject, you please concentrate for this year. The following chapters will come in board exam. Chapter number 1, Samvadatvam, Padya. Chapter number 2, Yadvishya Vinashyati, Gadya. Chapter number 3, Swasthvrittam Samachara, पद्य. चैप्टर नंबर 4, जनार्दनस्य पश्चिम संदेशः, गद्य, जो नाट्यांश भी है. चैप्टर नंबर 5, गुणवती कन्या, गद्य. चैप्टर नंबर 6, काष्ठखंडः, गद्य. स्टूडेंट, हियर 6 chapters and there is chapter number 4 is natyansh, dialogue writing. Okay, chapter number 7, सुभाषित कुसुमानि, पद्य. चैप्टर नंबर 8, साक्षीभूतः मनुष्यः, गद्य. चैप्टर नंबर 10, त्वमेका भवानी, पद्य. चैप्टर नंबर 11,
यस्य जननं तस्य मरणं गद्य. चैप्टर नंबर 12 कलिकाल सर्वज्ञो हेमचंद्राचार्य गद्य. चैप्टर नंबर 13 गीतामृतम पद्यम. चैप्टर नंबर 15 जयः पराजयो वा गद्य. चैप्टर नंबर 19 सत्यम मयूरः गद्य एंड नाट्यांश ऑल्सो. चैप्टर नंबर 20 तथैव तिष्ठति. Okay students, the following chapters will not come in board exam for 2020-21. Chapter number 9 चक्षुष्मान अंध एव गद्य. Chapter number 14 कह इदं दुष्करं कुर्यात्. कह इदं दुष्करं कुर्यात्. It is prose and नाट्यांश यानी dialogue writing chapter also there. Okay. Chapter number 16 अधृतम युद्धम marvelous battle पद्य. Chapter number 17 स्वाभाविकम सादृश्यम natural similarity गद्य. Chapter number 18 मुक्तकानि पद्य. These 5 chapters, chapter 9, 14, 16, 17 and 18 are reduced from your Sanskrit subject for this year. So remove किए हुए टोटल चैप्टर्स 3 प्रोज एंड 2 पोएम्स यानी टोटल 5 चैप्टर्स आर रिड्यूस फ्रॉम योर सिलेबस. ओके, नाउ यू आर क्लियर. फॉर गुजराती सब्जेक्ट ऑल्सो 5 चैप्टर्स आर रिमूव्ड. फॉर हिंदी सब्जेक्ट 7 chapters are removed, and for Sanskrit subject there are 1, 2, 3, 4, 5 chapters are removed. Grammar is as it is. Now we focus on it. Dear students, grammar section, there is no change in grammar section as it was in Gujarati and it was in Hindi also. हिंदी गुजराती संस्कृत तीनों 3 सब्जेक्ट में ग्रामर के कोई भी पॉइंट्स गवर्नमेंट ने रिड्यूस नहीं किए हैं. सो फॉर आवर संस्कृत सब्जेक्ट द पॉइंट्स विच यू हैव टू टीच थ्रू आउट द ईयर ग्रामर टॉपिक्स. नंबर 1 अभ्यास 1 पुनरावर्तन क्रियापद परिचय च. यहाँ पे वर्बल फॉर्म एंड वर्डल फॉर्म आते हैं. शब्द रूपाणी एंड धातु रूपाणी यू हैव टू प्रिपेयर. You can use textbook of 9th standard, Sanskrit textbook of 9th standard also, from page number 84 to 116. अभ्यास नंबर 2 विशेषण प्रयोग परिचय च. अभ्यास 3 उपपद विभक्ति परिचय. अभ्यास 4 कृदंत परिचय. अभ्यास 5 समास परिचय कंपाउंड एंड अभ्यास 6 विसर्ग संधि परिचय. Okay students, for the board exam marks you can get in this way. Board paper will become for 80 marks. School marks, स्कूल से आपके जो मार्क्स कवर होते हैं वो 20 मार्क्स. 80 मार्क्स बोर्ड के पेपर के, स्कूल के एग्ज़ाम के मार्क्स 20 एवरेज निकाल के उसमें से लेंगे. 80 plus 20 total 100 marks. Okay, and they will give grade also. Greater than equal to 91 A1, greater than equal to 81 A2, greater than equal to 71 B1, greater than equal to 61 B2, as well in this way C1 and C2. Okay, computer and physics ये subject में you will get only grade. You understand beta? स्टूडेंट्स, नाउ आई विश कि आप सारी बातें बहुत अच्छे से समझ गए होंगे. गुजराती, हिंदी एंड संस्कृत सब्जेक्ट में आपके जो कोर्स, जो चैप्टर्स रिड्यूस किए गए हैं वो अगर एक बार पढ़ लिए हैं तो भी आपको कोई उसका नुकसान नहीं है. बिकॉज समवेयर इन द राइटिंग सेक्शन यू कैन यूज़ those that chapters thinking also and material also. Okay, तो स्टूडेंट्स आशा रखती हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी पॉजिटिवली यूज़फुल होगा. ओके, शेयर करना,
एंड लाइक करना डोंट फॉरगेट. हैव अ गुड डे. स्टे होम, स्टे सेफ. बाय बाय.